Hello, everyone, and a very good evening, good afternoon to all of you. I hope you guys are doing well, and we are, of course, going to continue with our discussion on the right against self incrimination, right? That's the last thing we had discussed yesterday evening, right? In the 8 p.m. session. The last thing we had discussed is basically in relation to Article 20 of the Constitution, right? And Article 20 of the Constitution basically gave us three kinds of protections, right? Three kinds of protections as far as people who are accused in criminal cases are concerned, right? And we had discussed two of them. Right against self-incrimination is the only one that was sort of left out. And of course, after that, we're going to get started with some other fundamental rights. Article 20 itself is, of course, a fundamental right, but we are also going to be looking at some of the other fundamental rights. Particularly, we will get started with right to equality, right? Particularly, we will get started with right to equality. Before that, a quick introduction. Still, for those of you who are joining this channel for the first time, we have a few introductory things for you as well. I myself am from HNLU and I had an All India rank 20 in NLS Bangalore entrance. I'm also a Microsoft intellectual property research scholar, and I've worked at one of the topmost law firms in India, that is Amarchand Mangaldas, and my specialization, of course, was in capital markets. I do invite all of you to definitely join me on the Telegram group, right? There's a lot of discussions, etc., that keep on happening in the group. Please do feel free to join in, ask your questions there, make your suggestions about some of the classes and so on the group as well. For those of you who are enjoying my sessions, please do remember to use the code DEB10 to get an additional 10% discount on the various subscription options that you have, from 1 month up to 24 months. Those of you who are giving it next to next year as far as the CLAT examination is concerned. I am sure you guys know that the one of the most unique features, right, which is unique to Unacademy, and we're one of the first platforms to have introduced this particular option, is the raise a hand option, right? Is the raise a hand option. And this raise a hand option essentially gives you the ability to speak in the course of the app classes, right? So this is not an option for YouTube, but this is definitely an option that will be available to you when you attend classes on the app. Okay, hi Jivesh. Jivesh has just joined us. How are you, Jivesh? I'm doing very good. I'm doing very good. Please let me know आपका क्या चल रहा है. We do have some new batches that are going to start off. One is on the 27th of October, which is the Law Masters batch, right? And it is the 1 year comprehensive batch for CLAT 2022, and all the exclusive features of Unacademy platform are going to be available to you. And we also have the Law Tigers batch, which is starting on the 29th of October, which is again a beginner's batch for CLAT 2023. So do make the most of all of these opportunities and the various batches. You can, of course, use the platform for the live quizzes. You can create your own quiz as well, be the host, participate, and so on and so forth. Of course, all of our special classes, which are completely free for you, also have the same features, right? And of course, we do have the bugs bounty that is continuing, right? If you do report any particular problem, any inappropriate content and so on, you will actually be able to receive a prize for pointing out those mistakes, for detecting the bug, right, that is there on the system and so on, basically, right? Okay, moving on, we are going to continue with right against self-incrimination. Right against self-incrimination, which is the right to remain
silent, right? You cannot be compelled. If you look at Article 20 of the Constitution, it directly deals with some of these provisions, which essentially says that if you are accused in a particular case, right? If you are accused in a particular case, you cannot be compelled, you cannot be forced to be a witness against yourself, right? To give evidence against yourself and so on. That's not something. So just like you have the same system in most of the democracies, in most of the developed countries as well, say United States and so on. So similar system, right? The similar system is what we have here as well, that you cannot be forced. So if you are wanting to give evidence against yourself, for example, if you want to make a confession, right? Directly ऐसा ही आप करना चाहते हैं कि आप खुद ही confess करना चाहते हैं, then also there are some guidelines, right? For a full confession as well, right? For a full confession as well, what we do have is ultimately there must be a judicial magistrate, एक जज को physically वहां पर present होना चाहिए. So confession made only to the police, right? A confession made only to the police is not treated as a valid confession. वो माना भी नहीं जाता है, right? Of course, having said all of these things, ultimately कुछ तो तरीका होगा कि पुलिस भी अपना इन्वेस्टिगेशन कर सके, right? The police also has to be given appropriate powers and so on, so that they can do their own investigation, right? So they can do search, they can seize certain property, like अभी for example वहाँ वो बोट पे अगर क्रूज शिप में, right, नार्कोटिक्स ब्यूरो ने जाके रेड किया है, अभी अनन्या पांडे का भी हुआ है, आर्यन खान का तो इशू चल ही रहा है. सो कुछ तो उनके पास भी पावर्स हमें देने ही पड़ेंगे, अदरवाइज तो कभी कोई क्राइम डिटेक्ट ही नहीं हो सकता. सो while they have the investigating agencies and the various authorities, they have some powers. एक पावर या एक फ्रीडम जो अक्यूज्ड को दी गई है, वो ये फ्रीडम है या वो ये पावर है that you cannot be compelled to give evidence against yourself. Of course, इस context में भी कुछ exceptions available हैं, right? There are some at least controversial exceptions, तो मैं directly कहूँगा नहीं, but there are some complications, like for example the lie detector test and the narco test, or what is popularly known as the narco analysis, right? So I'm going to discuss both of these so that you guys understand that how exactly this thing works. Okay, so what is the lie detector test? In the lie detector test, basically a machine is going to check any fluctuation that exists in your dilation of your pupils, skin ka temperature, body temperature, blinking, ye wo, because biologically when you are lying, your body also undergoes some reactions, right? They're not very visible reactions. हम अगर पत्ते खेल रहे हैं, चाहे 3 पत्ती हो या फिर पोकर हो, ये सब है, बिल्कुल ब्लफ वफ तो हम करते रहते हैं. एज लॉयर्स यू आर प्रॉब्ली गोइंग टू बी ब्लफिंग मोर देन most other professions, I think, in many situations. But what this machine does is they'll check for all of these fluctuations in your heart rate, in your skin temperature, in your pupils, as far as the eye is concerned, and the machine basically declares whether your statement is true or false. एक baseline पहले बनाते हैं, basic questions पूछते हैं कि अभी दिन है कि रात है, तो एक आपने सच बोला कि चलो अभी दिन है, अब आपको एक झूठ भी बोलना है, 1 + 1 कितना है, तो आपने 3 बताया, तो एक बेसलाइन बन गया कि सच बोलने से आपका ये टेम्परेचर होता है, ये प्यूपिल का कंडीशन है, ये हार्ट रेट है, ये ब्लड प्रेशर है, और अगर झूठ बोलते हैं तो उसमें वेरिएंस ये हो रहा है. सो देन दे विल आस्क यू देयर सब्सिक्वेंट क्वेश्चंस एंड देन दे विल ट्राई टू फिगर आउट कि भाई अब ये आंसर सच है या झूठ है. सो डिड यू कमिट द मर्डर? Did you commit the murder? Did you commit the murder? तुमने कहा नो,
आई हैव नॉट कमिटेड द मर्डर। अब अगर मशीन कह रही है कि तुम झूठ बोल रहे हो, राइट, यू आर लाइंग according to the machine, according to your biological reactions, according to your biological reactions, machine ने कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं। okay, so is the lie detector test going to be enough evidence in itself, right? Please remember, it is not a final evidence. okay, lie detector test is not final evidence, final नहीं है। तो जब फाइनल नहीं है तो क्यों करते हैं लाई डिटेक्टर टेस्ट? क्या फायदा है पुलिस को जब फाइनल एविडेंस में हम उसको काउंट ही नहीं करेंगे? देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ द लाई डिटेक्टर टेस्ट? द पॉइंट इज that we will usually, the police will usually not ask you direct questions, मैं मर्डर किया कि नहीं किया, तुम उस रात को वहीं थे कि नहीं थे। What they will try to do is usually they will try to ask you those types of questions जिससे उन्हें आगे के इन्वेस्टिगेशन में, राइट, एविडेंस ढूंढने में, इन ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एविडेंस to do their further investigation, right? That type of questions they will ask. For example, if the question is, did you hide the murder weapon at your house? Did you hide the murder weapon at your house? ये क्वेश्चन आया, तुमने कहा नो, क्योंकि तुमने तो मर्डर ही नहीं किया है अकॉर्डिंग टू यू, राइट? तुमने कहा नो, मशीन कह रहा है यू आर लाइंग। सो व्हाट द पुलिस नाउ कैन डिराइव, व्हाट द पुलिस कैन देयरफॉर डिराइव इज कि भाई मर्डर का वेपन जो है वो घर ही पे होगा, राइट? बिकॉज मशीन इज सेइंग दैट यू आर लाइंग। सो व्हाट दे विल डू इज they will go and search your house a little more thoroughly, right? Did you hide it in your room? No. तो अभी तुमने नो बोला, मशीन कह रही फिर झूठ बोल रहे हो, तो फिर अब वो तुम्हारे रूम में थोड़ा सा ज्यादा मेहनत, right? They can use it for basically looking and trying to find out more kinds of evidence, right? So that's how usually lie detector test is used. सिर्फ डायरेक्टली पूछ लिया आपने क्राइम किया या नहीं किया, that answer and the machine's conclusion is not enough to establish responsibility. उतना काफी नहीं है, बट आप ऐसे क्वेश्चंस पूछिए जिससे कि आपको दूसरे एविडेंस मिल जाए, तो वो एविडेंस को आप यूज करके बिल्कुल अल्टीमेटली आपको मर्डर वेपन ही मिल जाएगा, जिसमें विक्टिम का ब्लड होगा, जो अक्यूज्ड है उसके फिंगरप्रिंट्स होंगे। तो अब आपको उसकी कन्फेशन की जरूरत नहीं है ना, यू डोंट नीड दिस पर्सन्स कन्फेशन, यू कैन यूज दैट एविडेंस टू अल्टीमेटली एस्टैब्लिश, टू प्रूव दैट दिस पर्सन इज द वन हु इज गिल्टी, राइट? एनी क्वेश्चंस? Any questions? Any questions? No questions? No questions? Okay. तो आगे बढ़ते हैं फिर. The next thing that I want to discuss is the narco analysis, right? जी वैसे कल मैं क्लास अटेंड कर नहीं पाया था, तो कोई बात नहीं, वो तो अवेलेबल होगा. You can always take a look at the recording, नहीं? तो फिर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, राइट? ओके, नार्को एनालिसिस में क्या है? नार्को एनालिसिस इज बेसिकली वेयर यू आर गिवन सर्टेन नार्कोटिक्स क्या होता है? नार्कोटिक्स तो आर्यन खान ही आपको डिटेल में बता सकता है, अब तक उसको लॉ तो पूरा क्लियर हो ही चुका है. आई एम नॉट सेइंग वेदर ही इज इनोसेंट और गिल्टी, आई रियली डोंट नो, बट जो जितना सब कुछ अब चल रहा है, कम से कम नार्को एक्ट के बारे में उसको, दैट इज द एनडीपीएस, राइट, द नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट,
एनडीपीएस एक्ट जो है वो तो हमारे दोस्त आर्यन खान को डिटेल में समझ में अब आ चुका होगा, एंड नाउ हिज गुड फ्रेंड अनन्या पांडे ऑल्सो आई एम श्योर is very aware, very acutely aware of the NDPS legislation. But anyway, narco analysis में क्या होता है? Basically, you are drugged. Okay, basically you are drugged, and you are drugged to the point कि जैसे वो कहते हैं ना, दारू पीने के बाद आदमी सच बोलता है. So सच क्यों बोलता है? बात ये नहीं है. It's also known as the truth serum. राइट, या अभी वो पीने के बाद सच बोलेगा. तो बात ये नहीं कि सच बोलेगा. बात ये है that basically after a point, if you are intoxicated, if you are drugged, your ability to lie keeps on reducing. सच बोलने के लिए मेहनत की जरूरत नहीं है. हाँ, कई बार ये हो सकता है कि सच बोलने के लिए जिगर बहुत चाहिए, राइट, बट सच बोलने के लिए मेहनत की जरूरत नहीं होती. इट्स सिंपली आउट ऑफ मेमोरी दैट यू आर आंसरिंग. इट्स ट्रूथ डजंट रिक्वायर अ लॉट ऑफ एफर्ट. झूठ बोलने के लिए आपको एफर्ट करने की जरूरत है, राइट, कि आप एक कहानी मन में बनाएंगे, पहले प्लान करेंगे, प्लॉट करेंगे, फिर जाके आगे आप झूठ बोलेंगे, राइट. सो लाइंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ effort on your part. So these drugs, these narcotics, what they do is basically they will reduce your ability to create a lie, right. तो क्या तुम उस रात को वहां पर थे? अब तुम्हें नो बोलना है, क्योंकि हाँ बोलोगे तो वहां पर एक एविडेंस अलग से मिलेगा, ये होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा. यू वांट टू अवॉइड ऑल ऑफ दैट एंड यू वांट टू लाई अबाउट इट, बट पहले झूठ सोचना पड़ेगा कि नहीं, मैं वहां नहीं था, कहाँ था, राइट. कुछ तो बताना पड़ेगा, अरे वहां जहां, लेकिन मैं तो क्योंकि झूठ बोल रहा हूं, सो आई विल प्रोबेबली नॉट हैव एनी प्रूफ कि आई वाज एट सम अदर प्लेस. दृश्यम देखिए, अक्टूबर कितना तारीख था, गए तो थे वहां, क्या कहते हैं, गोवा में सत्संग में और ये सब पूरी कहानी बनानी पड़ती है, राइट. लाइंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग एंड स्कीमिंग एंड स्ट्रक्चरिंग, if nothing else. So that's something that obviously everybody is not going to be able to do if you are drugged, if you are intoxicated, if you are ingested with narcotics, right. तो आप उस सिचुएशन तक नहीं पहुंच पाएंगे. तो क्या होगा, आप बिना झूठ बोले अपने आप सच बोलते. क्या तुम वहां थे? हाँ, मैं तो वहीं था. बिल्कुल. क्या तुमने मर्डर किया? हाँ बिल्कुल, मैंने मर्डर किया था. वो क्यों मर्डर किया था? वो उससे झगड़ा हुआ था, मेरी उसको बात ही अच्छी नहीं लगी है. So you will confess now. आपने तो सब बता दिया. Okay, you have confessed everything. But narco analysis is also not final evidence. Again, narco analysis में भी जो result आएगा, you cannot use that as conclusive evidence. What you have to do, I mean, what the police or the investigating agencies, what they have to do is इसमें भी वो और evidence, दूसरे evidence ढूंढने के लिए, to try to find out other evidences, what they will have to do is they will use this narco test. Okay, where did you hide the murder weapon? तो कहा वो मेरे तकिया के नीचे. तकिया के नीचे कोई नहीं छुपाता है, बट जैसे वो पीछे गार्डन में वहां पर रख दिया था मैंने, वहां फेंक दिया था मैंने, राइट. सो यू विल प्रॉब्ली कन्फेस एवरीथिंग, एंड व्हाट द पुलिस विल डू इज दे विल यूज दैट इंफॉर्मेशन. जो इंफॉर्मेशन आपने नार्को टेस्ट में दिया है, दे विल यूज दैट इंफॉर्मेशन टू फाइंड आउट द अदर एविडेंसेस, राइट, टू कनेक्ट द डॉट्स, टू क्रिएट देयर वर्जन, right, their version of what happened on the date of the crime and how you are the guilty person. वो कहानी connect और complete कैसे होंगी, right, वो सारे dots को connect करने के लिए they will use the narco test. Now what happened in the Arushi Talwar case is, first of all, a very sort of a very landmark case, very important case as far as narco analysis is concerned. All of you know the Arushi Talwar case, right? The Arushi Talwar and Hemraj, right? Arushi Talwar and Hemraj.
So ये दोनों का मर्डर हुआ था. 2 dead bodies were found, and the prime accused, the main accused, basically the parents of Arushi Talwar, that is Rajesh and Nupur Talwar. Okay. अब उसमें खैर वो अलग legendary case है, in the sense that there were so many, I mean, personally I thought there were so many loopholes and so many problems, and if you're going to find two people guilty, because that's what the order was ultimately, right? Ki Rajesh and Nupur Talwar are guilty. But if you're going to find two people guilty of murder, guilty of culpable homicide, I think थोड़ा सा ज़्यादा evidence, in my personal opinion, I think थोड़ा ज़्यादा evidence की ज़रूरत थी. But anyway, a very interesting case. I will try to do a separate session on the Arushi Talwar case one of these days perhaps. But the main issue जो हमें अभी इस कॉन्टेक्स्ट में जानना जरूरी है, जो हमें अभी जानना है, what is that main issue? The main issue is, it is in this case, in the Arushi Talwar case, जिसमें ये वाली पूरी बात बोली गई. नार्को टेस्ट can be done, ये तो ठीक है, but it can be done only with the prior consent of the accused. It can be done only with the prior consent of the accused. पहले आपको जिसके अगेंस्ट आप नार्को टेस्ट करना चाहते हैं, राइट, जिसके अगेंस्ट आप नार्को टेस्ट करना चाहते हैं, उसका स्पेसिफिक परमिशन पहले लेना पड़ेगा. ओनली इफ द अक्यूज्ड अग्रीज, ओनली इफ द अक्यूज्ड गिव्स हिज और हर कंसेंट, देन द नार्को टेस्ट will happen, right? तब जाके अल्टीमेटली नार्को टेस्ट किया जाएगा, राइट? प्रायर कंसेंट मतलब टेस्ट करने से पहले जो भी अक्यूज्ड है, जिसका आप नार्को टेस्ट करना चाहते हैं, टेस्ट से पहले उससे आपको परमिशन लेना पड़ेगा. वो अग्री करेगा, हाँ बोलेगा, तभी जाके नार्को टेस्ट किया जाएगा. विच ऑब्वियसली you know again, if you look at it from a practical standpoint, practically I thought again there are some problems with this idea. नहीं, सुनने में तो अच्छा लग रहा है, राइट? हम किसी को ड्रग्स दे रहे हैं तो अच्छी बात है कि ड्रग्स देने से पहले आपको उससे ही पूछना पड़ेगा, वो अग्री करेगा तभी उसको आप ड्रग्स देंगे. ये सब सुनने में तो बढ़िया है, बट द प्रॉब्लम इज, if the police wants to do a narco test, let's say Debajyoti, if Debajyoti is accused, right, of murder, let's say, ऐसे मैं accused नहीं हूं, बिल्कुल मेरा कोई मर्डर का केस नहीं चल रहा है, just, but so now the police wants to do my narco test. पुलिस ने कहा कि हम नार्को टेस्ट करना चाहते हैं, मैंने मना कर दिया, राइट? कि जीवेश यू हैव द सेम क्वेश्चन एज वेल. अगर मना कर दे तो हाँ, सो मैंने मना कर दिया कि भाई आई डोंट वांट टू गिव यू परमिशन. Now the police cannot do the narco test, right? They will not have the authority because they need my prior consent, which means that they will not be allowed to do the narco test. But the problem is, अगर मैं मर्डर में अक्यूज्ड हूं और मैं नार्को टेस्ट से मना कर दूं, the problem is there is a lot of presumption, there is a certain degree of, I think, certain degree of bias that will definitely arise, that will definitely happen if I actually say no, right? मैं अगर मना कर दूंगा, कुछ ना कुछ उसमें ये प्रॉब्लम आएगा ना कि अच्छा देवज्योति नार्को टेस्ट नहीं देना चाहता है, मतलब देवज्योति कुछ ना कुछ छुपा रहा है, राइट? जानने के लिए देखिए आहट का अगला एपिसोड, है ऐसा. So कुछ ना कुछ छुपा रहा है, ये वो. There's a certain degree of presumption and certain degree of bias and burden, I think. So या तो नार्को टेस्ट मना ही कर देते, I don't know. It's better than forcing a narco test. I understand कि चलो अब जबरदस्ती तो कोई नहीं कर सकता, but I think there is a big practical problem also कि अभी भी ये प्रॉब्लम तो जरूर है कि अगर मना कर दे, राइट, अगर मना कर दे
तो फिर वो प्रिजम्पशन और वो बायस और वो सब का क्या किया जाएगा, आई थिंक इट्स समथिंग दैट वी ऑल स्टिल हैव टू डील विथ, राइट? ओके, सो नार्को टेस्ट नहीं कर सकते, ये सब तो डन हो गया. एनी क्वेश्चंस? Yes, any questions? Any questions? If there are no questions, let us move on to Article 14 to 18, which is basically the concept of right to equality. The very concept of right to equality. So वैसे तो आप लोग हमेशा सुनते होंगे right to equality is there under Article 14, right? Right to equality is there under Article 14. But it's not only one article. It's not only one article. आप अगर heading भी देखेंगे Constitution of India में भी equality and the right to equality is covered from Article 14 up to Article 18. Right? अब 14, 15 and 16, 14, 15 and 16, ये तीन आर्टिकल्स में द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी एंड सम ऑफ द एक्सेप्शंस कि हम कब डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, वी प्रोवाइड रिजर्वेशन for OBC category, for scheduled caste and scheduled tribe category. We have reservations for minorities, for persons with disability. We now have reservation even for the general category if somebody is in the economically backward class of people, right? Economically backward class of people ke liye bhi again there is a certain degree of reservation and so on which is permitted. So 14, 15, 16 पे तो हम आते हैं, but Article 17 and Article 18, Article 17 and Article 18, ये जो दो articles हैं, these articles are very specific, right? Directly किसी एक चीज पे और वगैरह वगैरह पे directly Article 15, Article 17 and 18 are dealing with those things, right? So 17 is basically abolition of अनटचेबिलिटी. सो पहले अभी भी कहीं कहीं बिल्कुल इंडिया में ऐसा नहीं है कि पूरा खत्म हो गया है, राइट? देयर आर मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, मेनी प्लेसेस एंड सो ऑन वेयर आई बिलीव अनटचेबिलिटी इज स्टिल प्रैक्टिस्ड एंड सो ऑन, बट बाय एंड लार्ज अनटचेबिलिटी इज डेफिनेटली बैंड. तो लीगली तो एटलीस्ट कंप्लीटली बैंड है. द होल हरिजन मूवमेंट, ये आप कुएं से पानी नहीं निकाल सकते, ये नहीं हो सकता, परछाई भी अगर टच कर रही है तो भी there was, all forms of discrimination that a lot of people have obviously undergone and so on. So that form of untouchability is, of course, in all its forms, untouchability has been abolished, and this is a specific provision, right, which both Mahatma Gandhi, right, गांधी जी भी चाहते थे. गांधी जी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे नहीं, बट ऑब्वियसली गांधी जी also had a decent role, and Gandhiji's philosophies had a decent impact on how we ultimately drafted the constitution, and of course the drafting committee itself in India, right? Unity in diversity, right? So our diversity is evidenced from the beginning of the constitution itself, because the chairman of the drafting committee himself was Dr. Ambedkar, who was from a Dalit background, who was from a scheduled caste background, and so on. So abolition of untouchability हमने directly एक provision अलग से डाला है, क्योंकि भारत में equality कभी नहीं हो सकती अगर untouchability भी एक चीज practice हम लोग कर रहे होंगे, right? Now Article 18 is abolition of titles. So titles, abolition of titles. Titles का क्या मामला था? बिल्कुल राजा महाराजा ये सब. Some titles have been retained, but by and large, right? By and large, most of the titles in India are completely banned. Now there are some exceptions. कुछ titles तो allowed हैं. क्या titles allowed हैं? For example, अभी भी अगर आप देखेंगे
तो academic titles का क्या मतलब है? Like if you are a doctor, right? If you've completed a PhD, तो ये सब में से कुछ भी है तो आप डॉक्टर लिख सकते हैं, राइट? अपने नाम के आगे ये एक टाइटल हो सकता है. Then we also have military titles. Okay, like for example, if you are a colonel or if you are the general, you are the chief of Indian Army, इस टाइप का कुछ भी है तो भी again you can obviously have military titles if you are retired from the military also. If you are retired from the military also, तो भी उस टाइप के टाइटल्स बिल्कुल अलाउ होते ही हैं, राइट? लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव कि आप उसके बाद उसमें ब्रैकेट में बस RETD रिटायर्ड करके लिख देंगे, राइट? नाउ अनदर आई थिंक very important thing, another very important thing that I believe all of you should remember, right? That I believe all of you should remember about these abolitions of titles is there is a difference. There is a difference between titles and awards, right? Award अलग है और titles अलग है, right? Titles अलग है और awards अलग है. For example, हम civilian awards देते हैं, right? For example, हम military awards देते हैं. We have परमवीर चक्र, शौर्य चक्र, अशोक चक्र. These are all गैलेंट्री अवार्ड्स, ब्रेवरी अवार्ड्स. सिविलियन अवार्ड्स भी है, पद्मा अवार्ड्स हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, एंड द हाईएस्ट civilian honor that can be conferred, the highest civilian award in India of course is the Bharat Ratna, right? तो भारत रत्न भी किसी को मिल सकता है. स्पोर्ट्स में भी हम अवार्ड देते हैं, राइट? अर्जुन अवार्ड, राइट? Arjun Award, for the longest time Arjun Award was obviously the highest award in sports in India. Highest sporting achievement के लिए Arjun Award was the highest. उसके बाद फिर अब एक और highest award बन चुका है. What is the highest sporting award in India now? The highest sporting award in India now is the खेल रत्न award, right? जो initially जब आया था तो वो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, एंड रिसेंटली, वेरी रिसेंटली काफी कंट्रोवर्सी भी हुआ था उस टाइम की. कांग्रेस पार्टी ने कहा कि बदला ले रहे हैं, ऐसा हो रहा है. You know, there's a bit of controversy about it also, but now in any case officially the new name is the Major Dhyanchand Khel Ratna Award, which is the highest sporting award. कोचिंग के लिए भी मिलता है, right? That is the द्रोणाचार्य award and so on. So ये जो awards हैं, these awards are not titles. Awards are not titles. Please understand this very, very clearly. For example, if you think about somebody like, say, Sachin Tendulkar, okay, obviously Sachin has won the Arjun Award, Sachin has won the Khel Ratna Award, and Sachin has won the Padma Shri, Padma Bhushan, so Bharat Ratna also, right? The highest civilian award in the country, the highest honor that this country can confer on anybody, Bharat Ratna. अब हम लोग बोलने में बोलते जरूर हैं कि भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, राइट? भारत रत्न लता मंगेशकर, भारत रत्न बोलते हैं, राइट? वी से भारत रत्न, बट प्लीज रिमेंबर, ऑफिशियली सचिन तेंदुलकर के पासपोर्ट पे भारत रत्न सचिन तेंदुलकर नहीं लिख सकते, राइट? दैट्स नॉट अ टाइटल. अभी भी वो मिस्टर सचिन तेंदुलकर है. कोई यूनिवर्सिटी अगर उसको ऑनररी PhD दे दे, राइट? इफ अ यूनिवर्सिटी कॉन्फर्स an honorary PhD on that person and so on, तो बिल्कुल हो सकता है कि तो भी मिस्टर चेंज करके भारत रत्न नहीं लिखेंगे, तो भी मिस्टर चेंज करके हम डॉक्टर लिखेंगे, बिकॉज इफ यू हैव डन अ PhD देन यू आर अ डॉक्टर. इफ यू हैव डन MBBS, PhD करने की जरूरत नहीं है फिर तो. MBBS I'm so sorry. Just 1 second, guys.
अगेन सो लाइक आई सेड एमबीबीएस अगर किया है देन अगेन वो वैसा हो जाता है दैट एमबीबीएस करने पे यू आर आल्सो अ डॉक्टर. सो अवार्ड्स आर नॉट टाइटल्स. Awards are not titles. Please remember this very, very clearly. Right? I hope this part is completely clear. Right? So right to equality as a concept क्या है, रिजर्वेशन कब होता है, क्लासिफिकेशन कैसे होता है, एंड सो ऑन. दीज आर द थिंग्स. Right, we just don't have too much time right now, just about 15-20 minutes. So what we will do is I'd rather wrap up this session just a little earlier, and we will discuss all of these things. Right, what is the concept of equality, what are the various important cases. रिजर्वेशन के भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट केसेस हैं. राइट, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया particularly is a very landmark case on मंडल कमीशन. राइट, कि कितना 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता. सो दोज आर ऑल द थिंग्स दैट वी विल बी डिस्कसिंग राइट इन डिटेल today evening at 8 p.m. Today at 8 p.m. we have another session. So we will finish off right to equality. That's something which is related to Article 19, also something which is related to Article 21 also, because golden triangle, right, the golden triangle is 14, 19 and 21. What is the doctrine of arbitrariness, मेनका गांधी केस में क्या हुआ, ये सारी चीजें. राइट, अगेन ये सारी चीजें टुडे इवनिंग एट 8 p.m. right here on YouTube. Right, YouTube पे ही we will continue with this particular discussion. Right guys, so that's the plan for today evening. Please do remember to use the code DEB10 if you find my classes interesting and you want to get an additional 10% discount as well. Do remember to hit the like button before you leave. Please remember to hit the bell icon so that you don't miss your classes. Anyway, मैं telegram group पे भी आप सबको updates देता रहूंगा, so it should not be too much of a problem. Have a lovely day ahead of you. हम लोग की शाम को 8 बजे फिर से मुलाकात होगी. राइट, ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच.